Awesome. So now we are also live on YouTube, and I can share the YouTube link. Here is the YouTube link. If any of your friends can't join the webinar here on this Zoom, they can go to this link and watch the entire webinar live. Awesome. So let me quickly share my screen. Awesome. So today's webinar topic is food, planet, health. Whatever we eat that has an impact on this planet, our health, and other living beings. And in today's webinar, I'm going to shed light on how this happened and how, as an individual, we can make sustainable food choices so that we can fight with climate change, we can help animals, and we can help the human race. So why this is the burning topic, why your attention is needed, because whatever we eat is rapidly becoming an issue of global concern. Most of us might think that if I'm doing something, how that will impact the world or how that will impact someone who is sitting in the US. But we are in the time of globalization. हमारे पास internet है. It's very easy nowadays to know anyone in the any corner of the world, and we are so much connected. So अगर कहीं यहाँ इंडिया में कुछ होता है या इंडिया में if anything happened, then the impact of that thing can cause a ripple of effect on entire world. And animal agriculture is one of them. जो भी हम खाना खाते हैं दिन में, उसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि दूध है, दही है, मीट है, eggs हैं. They are all derived from animal agriculture, and these products are a staple part of our daily diet. But whatever we eat that is causing risk to public health and safety, this entire industry is creating food shortages. Animal agriculture at some extent responsible for chronic diseases and of course global warming. So the impact of our dietary choices seems more relevant today than ever, because अगर अभी हमने सही choices नहीं करी तो we and our next generation have to face the consequences, and it is our responsibility to give a sustainable world for our next generation. Now I use this word animal agriculture. I'm sure हम सबको पता होगा कि एनिमल एग्रीकल्चर क्या है. जैसे एग्रीकल्चर होता है उसी तरीके से एनिमल एग्रीकल्चर होता है. जिस तरीके से हम खाना उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, उसी तरीके से हम जानवरों को भी पालते हैं. हम मुर्गे पालते हैं, बकरियां पालते हैं, पिग्स पालते हैं, गाय और भैंसों को पालते हैं, और इन सब एनिमल से हम बहुत सारी प्रोडक्ट्स लेते हैं. इंडिया में पहले और इवन अराउंड द वर्ल्ड इट वाज हैपनिंग ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल. छोटे छोटे फार्मर्स थे, वो अपने घर में अपनी जरूरत के लिए कुछ जानवरों को रखते थे, तो ताकि उनके परिवार को दूध मिल सके, अंडे मिल सके, मीट मिल सके. बट नाउ दैट पिक्चर हैज चेंज्ड. अब बड़े बड़े शहरों में आपको फैक्ट्री फार्मिंग दिखेंगी. फैक्ट्री फार्मिंग, एनिमल एग्रीकल्चर को फैक्ट्री फार्मिंग इसलिए कहा जाता है बिकॉज जैसे अगर हम फैक्ट्री में कहीं जाए और एक ही तरीके की प्रोडक्ट की मल्टीप्लाई में जैसे प्रोडक्शन होता है, तो उसी तरीके से इन डेयरी फार्म्स के अंदर इन एनिमल्स का, जो फार्म्ड एनिमल्स है, उनका उसी तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है ताकि जो डिमांड है हमारी एनिमल प्रोडक्ट्स की, उन डिमांड को हम फुलफिल कर सके. नाउ देयर आर सेवरल issues with factory farming. For example, health hazards. जो भी workers
जैसे स्लॉटर हाउस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्री फार्मिंग। जिन जानवरों से हम कोई चीजें नहीं ले पाते हैं, जो भैंसे हैं वो दूध देना बंद कर देती हैं, या जो मेल काफ्स हैं जिनका डेयरी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है, उन सबको स्लॉटर के लिए भेज दिया जाता है। मीट मीट के लिए जानवरों को मारा जाता है स्लॉटर में जाके। नाउ इन स्लॉटर्स में और जो टैनरीज हैं उनमें जो वर्कर्स काम करते हैं, दे वर्क इन अ वेरी हजार्डियस कंडीशंस। ये जो फैक्ट्री फार्म्स हैं, यहाँ का जो सारा वेस्ट निकलता है, that dilute in the groundwater, and that also create lots of health related issues in humans. इन एनिमल्स को हॉर्मोन्स दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तब जब हम इनसे मिली हुई प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं तो हम भी वो एंटीबायोटिक्स और जो हॉर्मोन्स हैं उसको इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं, एंड दैट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन आवर जो हमारा टॉलरेंस है एंटीबायोटिक्स का वो बढ़ाता है, रेजिस्टेंस बढ़ाता है एंटीबायोटिक्स का। ताकि अगर कोई बीमार पड़े और किसी को एंटीबायोटिक्स दी जाए तो क्योंकि एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में इम्पैक्ट नहीं करेगा और जो बीमारी है उससे फाइट नहीं कर पाएगा। ग्लोबल वार्मिंग इज ऑल्सो अ कनेक्टेड इशू विद दिस थिंग। जो एनिमल्स होते हैं इन फैक्ट्री फार्म्स के अंदर उनको आर्टिफिशियली इंसेमिनेट किया जाता है, इम्प्रेग्नेशन होता है उनका जबरदस्ती, ताकि और एनिमल्स को प्रोड्यूस किया जा सके। डिफॉरेस्ट्रेशन इसके साथ बहुत ही स्ट्रांगली लिंक्ड है। इन जानवरों को चरने के लिए जगह चाहिए, और जगह चाहिए जहाँ पे इन एनिमल्स को रेस कर सका जाए। इस वजह से पेड़ काटे जाते हैं, जंगल साफ किए जाते हैं। मीथेन एमिशंस, जो ये सारे एनिमल्स हैं, the number of these animals, the population of these animals is so high that they जो मीथेन ये emit करते हैं, that is also causing global warming ultimately. और water wastage, ये जो पूरी industry है that consumes huge amount of water. So I will talk about all these issues in details in the further part of the presentation, but here I am trying to explain that जो फैक्ट्री फार्मिंग है दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जो स्मॉल स्केल पे एनिमल्स को पाला जाता है बहुत ही लिमिटेड एनिमल प्रोडक्ट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। उसके ऑपोजिट बहुत ही लार्ज स्केल पे इन जानवरों को बहुत ही कन्फाइंड जगह पे रखा जाता है, एंड दिस इंडस्ट्री इज इम्पैक्टिंग नॉट ओनली एनिमल्स बट आवर एनवायरमेंट, आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड आवर हेल्थ। सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। हमको शायद लगता होगा, बहुत लोगों को हम में से लगता होगा कि इंडिया के अंदर इतने फैक्ट्री फार्म्स नहीं है। हमारे यहाँ तो आज भी जो फार्मर्स हैं वो छोटे छोटे स्केल पे ही एनिमल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। वी आर नंबर 1 इन द टोटल नंबर ऑफ कैटल्स। हमारे पास 210 मिलियन कैटल्स हैं। हम नंबर 1 है बफेलो के पॉपुलेशन में। एक्चुअली इंडिया में पूरी दुनिया के 57% ऑफ द बफेलोज हैं हमारे पास ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, एंड वी आर नंबर 5 फॉर द चिकन प्रोडक्शन. So the point is that in India, all these factory farming and animal agriculture practices are inhumane, unregulated, and it's extracting a heavy toll on human and the planet. Now, we have often heard that, ये जो सारी products हैं, इसमें बहुत protein होता है, it help us, it makes us stronger, but अगर आप ध्यान से देखें तो इन फैक्ट एनिमल एग्रीकल्चर कॉस्ट मोर इन हेल्थ डैमेज देन इट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमी। कहीं पे हमको ये भी लगता है कि ये जो फ्लरिश हो रहा है इंडस्ट्री, इससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रूथ। ऑफ कोर्स दैट सपोर्ट्स इकोनॉमी, बट एट द सेम टाइम it brings diseases, it damage people's health, and ultimately it's actually causing damage to the economy. Now कई बार हम दूध पीते हैं, हमको पिलाया जाता है कि दूध में बहुत प्रोटीन होता है, it's very healthy, but is our milk really healthy?
So I would like to explain a little bit about this. Dairy industry uses illegal hormone injections on a daily basis for milk. Oxytocin नाम का एक इंजेक्शन आता है, एक ड्रग है, that is banned in India and it can only use in the medical procedure. ये जो ड्रग है वो गायों और भैंसों को डेली बेसिस पे दिया जाता है मॉर्निंग और इवनिंग में, ताकि इस ड्रग को दिए जाने के बाद दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस इन देयर स्टमक, और it actually releases the same chemicals that releases while they are giving birth to a baby. तो उनको लगता है कि हमने बच्चा डिलीवर किया है and increase the milk productivity. So this is very painful and it's very harmful for anybody's health, of course, health of animals and humans. And जब हम ये milk consume करते हैं तो indirectly हम भी ये जो सारे illegal hormones हैं, the part of those illegal hormones we also consume along with the milk. जो दूध हम पीते हैं, there are pus and bacteria in milk. इन जानवरों को बहुत ही लार्ज डोसेस में एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दिए जाते हैं, ताकि अगर इनको कोई बीमारी है, कहीं पे चोट लगी है तो उनको दर्द नहीं हो, और अगर उनको कोई बीमारी नहीं है तो उनको कोई बीमारी ना हो, इस वजह से उनको बहुत ही ज्यादा डोसेस दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स के. Now, these antibiotics and painkillers, these toxins dilute in the milk, and when we drink milk, we indirectly consume all these unnecessary toxic in our body. बहुत सारे दूध के अंदर पेस्टिसाइड्स पाया गया है. अगर आपने इन गायों और भैंसों का जो खाना होता है, नॉट द ग्रास बट जो फैक्ट्री में बना हुआ फूड होता है, कैटल फूड, अगर उसको आप उसके इंग्रेडिएंट पढ़ोगे तो उसमें पेस्टिसाइड्स मिलाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया है. इट्स अ वेरी कॉमन फर्टिलाइजर दैट these company use in the cattle feed. ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि इससे उनकी दूध की प्रोडक्टिविटी बढ़े. अपार्ट फ्रॉम दिस, जितनी हमारे पास दूध की डिमांड है कंपेयर टू दैट जितने एनिमल्स हैं, देयर इज नो वे कि इतने एनिमल्स इतना मिल्क प्रोड्यूस करेंगे कि हमारी सारी डिमांड को फुलफिल किया जाए. तो आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि एफएसएसआई ने कहीं पे रेड करी और उन्होंने नकली दूध पकड़ा. सो दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि बहुत सारी चीजें जैसे कि चूना है और यूरिया है, इन सारी चीजों से भी दूध बनाया जाता है आर्टिफिशियली, और जब हम उसे कंज्यूम करते हैं सो इट्स लाइक पॉइजन, एंड व्हेन वी कंज्यूम इट वी आर एक्चुअली पुटिंग आवर हेल्थ एट अ रिस्क. सो animal milk is neither healthy nor natural for humans. Why it's not natural? Because जब हम छोटे होते हैं, जब हम और कुछ सॉलिड चीजें नहीं खा सकते हैं, a human baby when they can't eat anything else, a solid food, तब तक जो मदर्स है वो लैक्टेट करती है, तब तक वो अपनी माँ का दूध कंज्यूम करके सर्वाइव करता है. The moment we human babies start growing teeth, eventually gradually mothers stop lactating, माँ का दूध आना बंद हो जाता है, एंड द आइडिया इज कि अब हमारे पास दांत हैं तो अब हम सॉलिड चीजें खाएं. आपने कहीं पे भी नहीं देखा होगा कि कोई भी और स्पीशीज किसी भी अदर स्पीशीज का मिल्क कंज्यूम करती है वीनिंग पीरियड के बाद. वीनिंग पीरियड उसको कहते हैं कि जब हमारे दांत आ जाते हैं और फिर हमें लिक्विड की जरूरत नहीं पड़ती है. Human is the only species that consume other species milk after weaning period. So animal milk is neither healthy nor natural for humans. Now we talk about eggs. So जो भी हम eggs consume करते हैं that derives from poultry industry. ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक यूज करती है उनके एनिमल फीड के अंदर. और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब हम इनसे डिराइव कई हुई प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, सो दैट प्रोडक्ट्स इंक्रीज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन ह्यूमंस एंड इन्फेंट्स. एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, इन मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया, की लोगों के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अगर आपको कोई बीमारी होती है और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है तो आपका बॉडी में ऑलरेडी इतना एंटीबायोटिक है कि जो आपको ऊपर से दिया गया एंटीबायोटिक है वो असर नहीं करेगा, एंड
you won't get the necessary support to fight the disease that you have. जो एग लेइंग हेन्स हैं, इसमें एक पिक्चर बना हुआ है जहाँ पे आप 2 सफेद मुर्गियों को देख सकते हैं. सो दिस इज हाउ दे आर केप्ट इन पोल्ट्री फार्म्स. बहुत ही छोटे छोटे केजेस होते हैं, उसके अंदर उनको अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही रखा जाता है. सिमिलर टू डेयरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर भी जो मेल चिक्स होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बिकॉज दे कांट ले एग्स. सो इवेंचुअली या तो उनको जिंदा ग्राइंड कर दिया जाता है, या उनको कई बार पानी के अंदर डुबा के मार दिया जाता है, उनको जिंदा दफना दिया जाता है. देयर आर हॉरिबल वेज टू डिस्कार्ड देम. And whenever we consume eggs, we are also indirectly supporting that the cruelty to these happening to these animals in the poultry industry. So now let's talk about meat. So same way, the eggs and milk are produced. Meat is also produced in same way. जो मीट हम जो चिकन हम कंज्यूम करते हैं, जो व्हाइट कलर का पिक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उनको ब्रॉयलर्स कहा जाता है. दोज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकन ब्रीड. ये जो ब्रीड है वो बहुत ही कम समय में ज्यादा खाना खा के अपना वेट गेन बहुत जल्दी करती है. इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल वर्ड्स, तो आप सोचिए कि अगर एक 10 साल का बच्चा है और उसका 100 किलो से ज्यादा वजन है, द सेम थिंग हैपन विद दीज चिकन. कई बार वो अपनी बॉडी का वजन नहीं उठा पाते और उनके जो पैर होते हैं वो दे गेट ब्रोकन बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ देयर बॉडी. बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में इन मुर्गियों को रेस किया जाता है. जो मीट हम कंज्यूम करते हैं उसके अंदर नाइट्रेट, सैचुरेटेड फैट्स एंड सॉल्ट, स्पेशली इन रेड मीट, ये सारी चीजें यूजुअली डॉक्टर्स हमको अवॉइड करने के लिए कहते हैं अगर इफ यू वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ. many people thinks that it's okay to eat fish, they are very healthy, but ज्यादातर fish जो इंडिया में कंज्यूम होती है, they are also raised in fish farms. They are not ocean fishes. They जैसे पोल्ट्री फार्म होते हैं, डेयरी फार्म्स होते हैं, उसी तरीके से फिश फार्म्स होते हैं. Apart in the condition of these fish farms are really worst, जिसमें ऑक्सीजन लेवल 0 होता है. बहुत सारी मछलियां मरी हुई होती हैं, बहुत सारी मछलियों को एक साथ उसमें रेस किया जाता है, बिकॉज that's how these industry generate profit. So the conditions in which these farmed fish are kept is very filthy and toxic. जो फिश हम जो रिवर फिश है, जो हम नदियों से पकड़ के कंज्यूम करते हैं, that fish also polluted with raw sewage, runoff from animal agriculture. जो slaughter houses हैं उसका जो भी वेस्ट है, जो टैनरीज है उसका वेस्ट है, जो इंडस्ट्रीज है उसका वेस्ट है, जो भी कूड़ा है, दैट ऑल गोज टू आवर रिवर्स. हर बार साल में एक बार बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे दिखाया जाता है जो दिल्ली की जो यमुना रिवर है जो दिल्ली से बहती है, और वहां पे व्हाइट कलर का बहुत ही इन अ वेरी ह्यूज दिस क्वांटिटी झाग बनता है. सो when you consume fish from these waters, they contains microplastic, trash, mercury accumulates and other harmful chemicals. Even जो pregnant women होती है उनको बहुत ही strongly कहा जाता है कि वो fish consume ना करें, because fish के अंदर mercury का जो level है बहुत ज्यादा होता है, and it's not good for pregnant women. So even fish, when we consume them, we are also we don't know what from which conditions, from which place they are
they are brought, and when we are eating them, we are indirectly consuming all these pollutants in our body. दिस इज नॉट इट. मेजर जूनोटिक डिसीजेस जो है, जैसे कि सार्स है, कोविड-19 है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, दे आर ऑल एनिमल बॉर्न डिसीजेस जो कहीं ना कहीं एनिमल से ह्यूमन के अंदर आए हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ सीरियस थ्रेट व्हेन वी कंज्यूम मीट. Every time we are putting ourselves for the risk of zoonotic diseases. So we think that all these dairy products are really healthy, and they are making us strong, but that's not the case every time. Now, in all these places, in dairy farms, fish farms, and in poultry farms, these animals are being exploited every day. अगर आपने अपने नजदीक में अगर कहीं पे डेयरी फार्म है, अगर आपने कभी विजिट किया है, तो आपको हार्डली वहां पे मेल काफ दिखेंगे, क्योंकि जब भी मेल काफ पैदा होता है किसी भी डेयरी फार्म के अंदर, तो उसको अपने मदर से दूर बांध दिया जाता है, क्योंकि मेल काफ तो दूध देगा नहीं बड़ा होके. और एग्रीकल्चर के अंदर अब हमारे पास बैल की इतने रिक्वायरमेंट है नहीं बिकॉज ऑफ द मशीनरी. द सेम गोज विद द बफेलोज. जब बफेलो का मेल बेबी है, तो उसको भी द मेल काफ, दे कीप द मेल काफ अवे फ्रॉम द मदर, ताकि जो दूध है वो हम हमारे यूज के लिए निकाल सके, और जो मेल काफ है वो दूध ना पी जाए. ज्यादातर डेयरी फार्म्स के अंदर मेल काफ होते हैं, उनको खाना नहीं दिया जाता है, बिकॉज वाई टू वेस्ट फूड ऑन समथिंग विच इज नॉन प्रोडक्टिव. उनको अपनी मदर से दूर बांध के, बहुत ही छोटी सी रस्सी से उनको बांध के रखा जाता है. कई बार वो अपना सिर भी नहीं उठा पाते हैं, उनको मूवमेंट करने का फ्रीडम नहीं है. मोस्ट ऑफ दिस बफेलोज एंड काउस, दे स्पेंड देयर एंटायर लाइफ टाइड अप इन अ वेरी स्मॉल एंड कन्फाइंड प्लेसेस. जब जब दूध निकालने का समय होता है, तो वो जो मेल काफ है या जो बछड़ा है या बछड़ी है, उसको मदर के पास लाते हैं 5 मिनट के लिए, और फिर उसको मदर से दूर ले जाते हैं ताकि माँ का दूध आने लगे और हम उसको निकाल सकें. इवेंचुअली बिकॉज ऑफ malnutrition, मेल काफ दे डाई, एंड व्हेन दे डाई, उनकी जो स्किन होती है उसको उधेड़ के उसके अंदर ग्रास भर के एक डमी बनाया जाता है, उसको खाल बच्चा कहते हैं. सो क्योंकि काफ मर गया है, अगर मदर जो है वो अपना बच्चा नहीं देखेगी तो उसको दूध नहीं आएगा. तो जब जब दूध दोने का टाइम होता है, मिल्किंग का टाइम होता है, तो उस खाल बच्चा को माँ के पास लाया जाता है. माँ अपने बच्चे की स्किन को स्निफ करती है, और मदर को लगता है कि ये मेरा बच्चा है, और मदर को दूध आना स्टार्ट हो जाता है. इवेंचुअली मदर रियलाइज कि ये तो दिस इज अ डमी, दिस इज नॉट माय बेबी, एंड अगेन जो लैक्टेशन होता है वो बंद हो जाता है. तो कई बार उनको लाठी से मारा जाता है जब तक वो दूध नहीं देना चालू करें. और उनको, जैसे कि मैंने पहले बताया, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, हार्मोन्स दिए जाते हैं, दोज आर वेरी पेनफुल. और उसके बाद फिर उनको फिर से दूध आना चालू हो जाता है, और फिर उनका दूध निकाल के उसको बेचा जाता है बॉटल्स में भर के. सेम थिंग हैपेंस विथ चिक्स इन द पोल्ट्री इंडस्ट्री. जैसे कि मैंने बताया, मेल चिक्स का कोई इकोनॉमी वैल्यू नहीं है बिकॉज दे कांट ले एग्स. तो इस तरीके का एक रोलिंग पैनल होता है जिसके ऊपर उनको रख दिया जाता है, एंड देयर इज अ ग्राइंडिंग एट द एंड, ग्राइंडिंग मशीन. और चिक जो जिंदा है, जिंदा चिक सारे उसमें जाते हैं और वो ग्राइंड हो जाता है, एंड उससे बाकी एनिमल्स का खाना बनाया जाता है. जैसे कि डॉग फूड जो बनता है, कैट फूड बनता है, उसमें यही सारे जो मेल चिक्स हैं, उनका जो मीट होता है ग्राइंड हुआ हुआ, उसको यूज किया जाता है. Debeaking is also a very common practice in poultry industry. ये जो चिकन है, अगर आपने कोई पोल्ट्री फार्म विजिट किया है कभी, सो एक बहुत बड़े शेड में दे यूजुअली कीप so many chickens, and
इन नॉर्मल जनरल केसेस वो जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इट्स वेरी क्राउडेड. सो जब चिकन परेशान होती है, देन दे स्टार्टेड पोकिंग ईच अदर विद देयर बीक. कई बार उनको इंजरी हो जाती है, तो अगेन दे स्टार्ट पोकिंग दैट इंजर्ड बर्ड. तो वो एक दूसरे को पोक नहीं करे परेशान होके, इसलिए जब वो छोटी होते हैं चिकन, तो उनकी जो चोंच होती है उसको काट दिया जाता है. एक जलता हुआ रॉड होता है गरम, उसके ऊपर उसका बीक रखा जाता है और वो कट जाता है. अराउंड 20 to 30% chicks dies during this process because पेन की वजह से वो खाना नहीं खा पाते और फिर वो मर जाते हैं. So we consume all these things because we have been taught ki these are healthy and no harm is being done to any animals in the production of this thing, but that's not true. Does milk hurt? Yes, it does. It does to cows and buffaloes. Do eggs hurt? Yes, it they do. They do to egg laying hens and the male chicks. And does meat hurt? So yes, of course, because for getting meat you have to slaughter a life. And if you have visited a slaughterhouse, I have visited a slaughterhouse, and it's horrifying. It's very horrifying to see what is happening in slaughterhouse. एक animals के सामने दूसरे animals को मार दिया जाता है. And these are not things. They are living beings. They are smart. They have feelings. They have compassion for humans, for other animals. आपको पता है जो गाय होती है, जो उनका हर्ड होता है, तो उसमें जो बच्चे होते हैं, जो काफ होते हैं, उनको जो दूसरी गाय होती है, जो मदर नहीं है बट उस ग्रुप का पार्ट है, वो बेबी सिट करती हैं जब मदर्स जो हैं वो चरने के लिए जाती हैं. आपने देखा होगा अगर आपने किसी गाय को कभी रोटी खिलाई है, सो दैट काउ अपीयर्स ऑन योर गेट एट द सेम टाइम फॉर फूड. और अगर आप उसको नहीं देते हो तो कई बार वो गेट खटखड़ाती है लेच हिला के अपनी जीभ से. सो दीज एनिमल्स आर they have feelings, and जब एक एनिमल के सामने दूसरा एनिमल काटा जाता है, it's very terrifying for them because अगला टर्न उनका है. So now if we know these things and we know that all the products that we are consuming, it hurts environment, it hurt animals, then I think we all should make what is sustainable and right choice for everyone. There is this term called speciesism. Before I explain this term, I would like to run a poll. So poll is basically you will see a question on your screen. दो क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर देना है. You can answer whatever you feel is right. These are anonymous polls, so इसमें आपका नाम या email ID नहीं आएगा. आप फ्री होके विदाउट एनी फियर आपका जो भी आंसर है उसको आप दे सकते हो. You will have around 10 seconds, 20 seconds, and after that I'll stop the poll. So I request all of you to please answer it. Okay, now I think all of you will be able to see the questions. So the first question is, would you kill and eat your pet dog, cat or bird? अगर आपके घर में कोई बिल्ली है या कुत्ता है या पंछी है तो क्या आप उसको मार के खा सकते हैं? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, वुड यू ड्रिंक द मिल्क ऑफ अ डॉग, कैट और पिग? क्या आप किसी कुत्ते, बिल्ली या सुअर का दूध पिएंगे? ओके, सो आई विल वेट for some more time and then I'll close this. Okay, more than 50% of the participants answered. I'm sharing the results with you. Okay, now you can see the results. So पहले सवाल के जवाब में 100% लोगों ने बोला है कि नहीं, हम हमारे जो पेट डॉग है या कैट है या बर्ड है, we will not kill and eat them.
एंड जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें 99% लोगों ने बोला है कि हम बिल्ली, कुत्ते या सुअर का दूध नहीं पिएंगे. सो दिस इज स्पीशीसिज्म. जब हम चिकन कंज्यूम करते हैं तो जो चिकन है वो भी बर्ड है, और आपका जो पैरट है वो भी बर्ड है. पर क्योंकि पैरट को हमने पहले से एज अ कंपेनियन एनिमल देखा है तो हम पैरट को नहीं खा सकते हैं, पर हम चिकन को खा लेंगे. जैसे दूसरा क्वेश्चन था जिसमें लिखा था कि क्या आप कुत्ते का दूध पिएंगे कि नहीं पिएंगे, तो 99% लोगों ने बोला नहीं, हम नहीं पिएंगे कुतिया का दूध, फीमेल डॉग का दूध, हम विल नॉट कंज्यूम दैट. बट द सेम वे, जैसे एक गाय है जो अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, और द सेम वे जो फीमेल डॉग है या फीमेल पिग है वो भी अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है. जो कंपोनेंट्स गाय के दूध में होते हैं वही उनके दूध में भी होते हैं. कैल्शियम गाय के दूध में भी होता है, कैल्शियम पिग के दूध में भी होता है, फीमेल डॉग के दूध में भी होता है ना, बिल्ली के दूध में भी होता है. पर हम कुत्ते का दूध नहीं पिएंगे क्योंकि वो कंपेनियन एनिमल्स है. तो हमने इन एनिमल्स को एक सेट में देखा है कि इन जानवरों को हम खा सकते हैं, इन जानवरों का दूध हम पी सकते हैं, इन जानवरों को हम नहीं खा सकते हैं, इन जानवरों का दूध हम नहीं पी सकते हैं. बट अल्टीमेटली दे आर ऑल एनिमल्स. एंड कोई डिफरेंस नहीं है जब एक गाय अपने बच्चे को दूध पिलाती है और एक पिग अपने बच्चे को दूध पिलाती है. सो वी आर द वन हु इज मेकिंग दिस डिफरेंस, एंड दिस इज कॉल्ड स्पीसीजम. कि किसी एक प्रजाति के जानवर को अलग तरीके से ट्रीट करना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और किसी एक प्रजाति के जानवर को या किसी एक प्रजाति को अलग तरीके से ट्रीट करना. सो और भी बहुत सारे इज्म्स हम देखते हैं हमारे आसपास. रेसिज्म है, सेक्सिज्म है, and these are the discriminations, and so is the speciesism. This is also discrimination that we do with animals, and this is something that we can change very easily by changing our diet and by understanding that all animals are equal. Now the last important factor of this presentation is that how animal agriculture is impacting climate and our environment. So, as I said earlier, animal agriculture is one of the largest sources of greenhouse gases. Meat and dairy industry produces 60% of agriculture's greenhouse gas emission, despite providing only 37% of our protein. As I said earlier, this industry uses high amount of water and land. आप देख सकते हैं एनिमल एग्रीकल्चर यूजेस 33% ऑफ ड्रिंकिंग वाटर and 70% of the agricultural land, and is the main cause of deforestation. अगर यही जमीन जहाँ पे हम अभी एनिमल्स को रेज कर रहे हैं, if we can raise food, then we can even feed more animals. जितना अनाज हम इन जानवरों को फीड करने के लिए उगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोया, बहुत ज्यादा सोया इन एनिमल्स को फीड किया जाता है. अब आप कंपेयर करेंगे तो एक गाय और एक भैंस है, वो हो सकता है कि 6 किलो गेहूं खा ले, बट एक इंसान ऑफ कोर्स 6 किलो गेहूं नहीं खा पाएगा एक बार में. सो इफ वी यूज द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज to make food, to raise food for animals, for humans, then we can feed more mouth. Human lives. Climate change is a very much happening everywhere. हम हर बार देखते हैं कई जगह पे बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है और 2 साल 3 साल बाद उसी जगह पे पानी की कमी हो जाती है. जैसे कि हमने देखा था बेंगलोर में फॉर एग्जांपल, एंड इन चेन्नई. चेन्नई में एक टाइम था जब बहुत ज्यादा बाढ़ आई थी, एंड आफ्टर 5 years in the same city there were no groundwater. So these are all the signs that climate is changing, and in 2019 more than 1 million people lost their homes in climate change events.
और एक रिपोर्ट के हिसाब से 2025 तक 600 मिलियन लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज इवेंट्स की वजह से अफेक्ट होंगे। एंड इंडिया इज ऑन द 5th नंबर इन द क्लाइमेट इंडेक्स, तो इन टर्म्स ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो we all we faces these type of events more than other countries. Animal agriculture is one of the biggest polluters. 53 million tons of methane emits through this factory farming and animal agriculture. जो dairy farms हैं and slaughter houses, so insufficient poultry industry, their waste management is not efficient. ज़्यादातर जो waste होता है that dilutes in the groundwater or in the nearby river, and ultimately it pollute the water resources, and when we drink them, we drink those pollutants along with the water. As the next point say, high levels of groundwater and river water contamination happens because of this industry. So it's not only impacting the health, not only impacting animals, but impacting our environment significantly. So now the question is, what you can do. So going vegan is the best thing you can do. Many of you who don't know what is vegan. So vegan is a lifestyle. Veganism is a lifestyle where a person does not consume anything that derives from animal. So for example, I'm a vegan, so I will not consume milk, meat, eggs. I do not consume honey. I do not wear leather or any accessories that made with leather. And I believe that animals are equals to me, and I have no rights to exploit them for my need. So many people around the world, they are going vegan. बहुत सारी जगह पे आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा। बहुत सारे इंडिया में there are many sports person, बहुत सारी celebrities हैं, they are also going vegan. So going vegan is the best thing you can do, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. We are so lucky that we are in India with a rich agricultural with rich agricultural industry. हमारे पास बहुत सारे धान हैं, we have pulses, we have vegetables. So the good thing is that majority of what we eat is accidentally vegan. Chola bhatura is vegan, vada pav is vegan, most of the South Indian dishes are vegan, and the street food that we eat, our traditional street food, most of them are vegan. So we can veganize our daily food very easily. Instead of making your paratha in ghee, you can make it in oil and it's vegan. Instead of adding paneer in your palak paneer sabzi, you can add tofu, and you can have a palak tofu which is vegan. So you don't really have to go above and beyond to go vegan. You can just look out for animal products in your food. You can easily remove them, and your dish will be vegan easily. And the most important thing is that all these food, all the vegan plant-based food that we eat, they are very protein rich. They have all the dietary requirements that we need. So why should we, hurt animals if we can get whatever we want, whatever we need from plants? Here are some of the examples. For example, pumpkin seed, moong dal, chickpeas, split peas, lentils. All these pulses are very protein-rich food. Dry fruits, kidney beans, lentils, spinach, they are very iron-rich food. For orange juice, if you drink a glass of orange juice, then you'll get more calcium compared to if you drink a glass of milk. So tofu is more calcium rich and protein rich compared to paneer. So all these vegetables, all these plant-based
food items, they are very high with protein, iron, calcium. And when we consume, then we don't really need to drink milk or eat paneer or eggs or meat to fulfill our protein, iron, or calcium or other supplements requirement. Vitamin B12 is something that we all need. It is often come as a myth that vegans and vegetarians have always vitamin B12 deficiency, but it's not true. I have many friends who are non-vegetarian and they are also facing vitamin B12 deficiency. So when you shift, when you change your diet, when you shift to a vegan diet or a plant-based diet, taking regular supplements of vitamin B12 is a good option. You can go to your doctor, you can do test and check your vitamin B12 level. And if it's low, then there are plenty of B12 options available in the market, and many of them are vegan. You can have them and you will not face vitamin B12 deficiency. So why veganism? Because veganism is good for health. It is proven that people who eat vegetables and who follow plant-based diet, vegan diet, they have 3/4, 1/2 lower rate of high blood pressure. They are at the 2/3 lower risk of type 2 diabetes. They have a 15 to 20% lower risk of cancer. And people who follow vegan diet, they have significantly lower cholesterol level. And all these things we really need to have a healthy life. Now, veganism is a win for planet as well. By going vegan, you are reducing greenhouse emission. You save huge amount of water. For example, to produce 1 kg chicken, you need somewhere around 4,000 liters of water. And if you are drinking 1 glass of milk, you are technically wasting somewhere around 2,000 liters of water. So when you are replacing your chicken with a plant-based food, you are saving huge amount of water. You help in reducing deforestation, you helping ending world hunger. And this is a saying that whatever we eat, that's what we become. So if you eat healthy, then it overall help with your wholesome wellness. And of course, last but not the least, and very important, veganism is also a win for animals. When you go vegan, you reduce animal suffering, you respect animal rights, and you leave more land for wildlife. So all those people who love tigers and elephants do go vegan. These are some of the celebrities. They are vegan. The first one is Kuntal Joyshir. He summited Mount Everest, I think, 2 times on a vegan diet. Joaquin Phoenix, everyone knows him from his role in Joker movie. He has been vegan almost his entire life, and recently, like not recently, but a couple of years ago, he gave this Oscar speech, and he only talked about animal agriculture and animal rights in that. And Amala Akineni, she's a South Indian actress, and she's an animal rights activist, and she's also vegan. Apart from these celebrities, there are other names. You must know Malika Sherawat, Virat Kohli, Richa Chadda. They are some of the celebrities who are vegan and following plant-based lifestyle. So now many of you who want to try this thing, they're thinking that, okay, how we can start this thing. So it's very easy. We have 2 programs called, we have a program called 10 Weeks to Vegan. We have 2 versions of that. We have it in Hindi and English. So it's a 10-week challenge. Every week you will get 1 email on your email ID. The email will contain more information about animal agriculture, how it's impacting environment, animals, and our health.
and it will have easy recipes and some tips that will help you during your vegan journey. So you will get healthy and easy vegan recipes. You'll also get tips from registered dietitian, and you'll also get transition support from vegan mentors. So all the participants from these colleges who registered for our webinar, who have selected that they would like to join 10 weeks to vegan, you will receive your first email day after tomorrow. So I request all of you, please keep checking your emails, and even if you are not considering going vegan immediately, you can get more information, and you can learn about vegan recipes and other important facts. So please do open these emails and read all the information that you get. We understand that changing diet is a very crucial process, and the motive of my entire presentation is not that I force all of you, or I ask all of you very strongly to go vegan. But at the end of the webinar, I request all of you that if you find, if anything of what I said make any sense to you, do your research, try to reduce your animal product consumption. If you are drinking 2 glass of milk every day, then try to reduce it to 1 glass. If every time you go out and order chicken or paneer or anything that contains cheese, then once in a while you can go for plant-based option. And almost in every restaurant in India, you can easily find vegan options. So if you see any value in this, then reduce your animal product consumption as much as you can. Every step is important, every action is important, and gradually you can shift towards more plant-based food or vegan lifestyle. So thank you so much everyone for joining me today. We have 2 social media handles. We are on Instagram with Vegan Outreach India, and our Facebook handle is Vegan Outreach India. So do explore us, follow us for cute animal pictures and about our campaign updates and how you can volunteer with Vegan Outreach. And yes, thank you so much for joining today. And now I'm excited for question and answer session. So I hope I bored no one. If somebody will say that you bored us, then it will be bad. Okay. So we've got 4 questions. Okay. Have to know the milk which are consuming every day, they are safe or not. There is no way to know that because you never know if your milk has been produced with proper hygiene. We never control the conditions in the dairy farms because we are not there. So I'm so sorry. Every day there is no way you can say that your milk is safe. Okay, it is difficult to live vegan in Goa. That is not true. I visited Goa many times, and I found plenty of vegetarian and vegan food in Goa. And as I said, it's not difficult to veganize your dish. I understand that on coastal areas, people eat more seafood, and but it's not that there are no vegetables in Goa and you only have to eat seafood. So I disagree that it's not difficult, but if you find it difficult, then you can take your time. You can try with one thing. When I was not vegan, I was a hardcore
food enthusiast, especially for non-vegetarian and especially for seafood. And I completed my journey gradually by, ditching one food at a time. So if you have a will, you can definitely do that. How? Okay. I don't know how you can get fat by eating vegan food, but many people have reported that when you change your diet from one type of diet to the other, for example, if you are going non-vegetarian from vegetarian, or you are going uh, vegan from vegetarian, then there will be some visible changes in your body. But I'm sorry, I don't know any recipe that will make you fat. You can try eating tofu if but I don't know. There is no scientific evidence that, at least not I'm aware of, that any specific vegan recipe will make you fat. I'm sorry. Okay, this we get a lot. By consuming plant, we also harm the plant. So plants do not have nervous system. So plants, we read that plants respond. They do respond, but they do not feel pain. They do not scream when you cut them. Opposite to animals, they have a nervous system. When you cut them, they bleed, they scream. So and that's why they are called sentient. So of course that is not true that you harm the plants, but ultimately, these animals are like, plant is something that is being fed to these animals. So when first you feed plants to these animals, then you eat these animals, then it's the double harming. So we can reduce it. At least we can save sentient animals by not eating them. Okay. So I've said earlier, someone is asking what about the nutritions we get from meat and not vegetables. So as I said, you can get all the nutritions that you want, that you need from vegetables. You don't really have to depend it on meat. In fact, many sportsmen and fitness enthusiasts, they are actually going plant-based because when you go plant-based, you get more energy compared to what the protein that you get from meat. So that's definitely not a topic of worrying. If you go vegan or plant-based, and if you eat balanced and whole diet, if you include all vegetables, all pulses in your diet, then I strongly believe that you will not need to eat meat or other animal products for the nutrition. Okay, I have no idea how the color of egg changes from brown to white or white to brown. And I think I'm not the right person to answer that. Does eating non-veg makes our memory less? Eating veg food makes our memory strong? There is no scientific evidence behind this, that someone who is eating non-vegetarian food regularly, they'll have memory loss, and someone who is eating veg food regularly, their memory is strong. But yes, energy wise, when you eat more plant-based food, you feel, so for example, often after eating lunch, you feel lethargic, you feel a little bit lazy. But if you eat good amount of salad in your lunch, then you will feel more energetic. If you eat sprouts in your lunch, then you will feel more energetic. So of course, energy wise, mood wise, it helps. Memory wise, there are no scientific evidence that it helps.
Can you explain benefits of going vegan for skin? Many people says that their skin improves after going vegan or plant-based, but of course you will feel, happy because you are not harming animals, you are helping environment, you are feeling healthy. So when you are happy, you will anyways glow and your skin will glow. So yes, there is one benefit that you will be happy, and happy person's skin always glows. So yeah. Okay, so these are all the questions that I get. If you have any more questions, I'm sorry, we have time crunch and I won't be able to answer any more questions. But if you have any other questions, you can send those questions on this email ID. This is my email ID. And I will be happy to answer all the questions that you have. If you are thinking about going vegan and you don't know where to start, do open your 10 weeks to vegan emails. If any of you have opted for not receiving these emails during your registration form, and now after attending the presentation, if you are thinking of trying this thing out, then again you can email me and I'll send you the registration, the 10-week registration form, and you can sign up for 10 weeks to vegan program. And yeah, send me your more questions. And I'm so thankful to all of you. Almost 500 people stayed till last. It never happens before. So yay, so excited. I feel bad because this is a webinar and I can't, so I won't be able to, listen to you all. But if you like my webinar, if you like listening to me, you can share some good words in chat. It will be encouraging to me. I'm thankful to all the students for attending the webinar and staying till end. I am going to add a couple of students in the panelist so that we can get a good picture, and I can show to everyone that, see, I have conducted this webinar and 500 students were there till last. So I'm just randomly adding people in the panelist. When I promote you in the panelist, I request you to switch on your camera because I need to take a picture. All the students who are promoted as panelists, please switch on your camera so that we can click a picture. Please join back when I add you in panelist. You might log out, but you have to log in again. So please